Hi everyone, especially my equalizers, my lovely Vani the Voice mascots. कैसे हैं आप लोग सब? Today I've come to you with a very different topic, with a topic which absolutely could be slightly sensational and which जिसने मुझे भी परेशान करके रख दिया, which kind of blew out the air out of my own lungs. So मैं Netflix पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी ऑन सोशल मीडिया, ऐसा ही कुछ नाम था. आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग नेम्स हियर. एंड मैंने वो डॉक्यूमेंट्री को 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी विदाउट इवन, और मैंने आई डोंट नो मैंने कभी भी इतनी लंबी कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री ऐसे वन शॉट पे बैठ के देखी हो, बट दिस टाइम आई डिड बिकॉज इट वॉज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी टू टॉक अबाउट द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ. It was on social media. It was about how human beings are getting manipulated, you and me, all of us, how we are fed certain information and how we are the products of these mega companies who are in a way manipulating us, who are in a way feeding us with information depending on what we see. चलो मैं आपको बताती हूँ. It is just so, मतलब आपको ऐसा लगेगा that you know how somebody can get down into your own brain and totally manipulate you, and what is the reality of social media. Social media जब आई थी in the world, you know, it is even now used for certain super amazing things, like let's say finding an organ donor, finding a lost person of your family, raising funds for a cause that you believe in, और ऐसी किसी चीज़ के लिए raise funds करना जो दुनिया के लिए अच्छा है. All of that is the good side of social media. All of that, कई बार when you feel alone, आपके groups बनते हैं and you get a lot of motivation from these self-help groups or these groups. All of that is a great good thing about social media. But जहाँ पर सोशल मीडिया वाले लोगों ने ये सोच लिया, and all these people who run these huge companies, multi-billion-dollar companies, the biggest ever companies जो humanity ने अभी तक देखी है, they wanted to give it the humane angle. That means they want technology to become human. That I think is a good thought, but that is exactly where human manipulation starts. Let me tell you about it. So मैंने एक line पढ़ी थी and I want to read out that line again for you. वो लाइन थी that if you're not paying for the product, you are the product, my dear children. ध्यान से इस चीज़ को सुनो. आप जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उनको देखिए. You don't pay even one single rupee. You just don't pay anything because you are the product. Your attention is the product. आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, whatever you want to achieve, you require a lot of your attention. But because majority of the youth nowadays is suffering from attention deficit syndromes, you cannot even concentrate for 1 second. आपका मोबाइल फ़ोन होता है, the moment it does string, and how they manipulate you. कोई टाइप कर रहा है, वो डॉट करके दिखाते हैं, वो ऑनलाइन चीज़ें आपको दिखाते हैं, वो नजेस आपको भेजते हैं, so that your attention is the thing that they are, you know, they totally own it, and आपका खुद का attention is not in your control. Imagine how dangerous it is. Your attention is a product for every single thing which is on social media. It is, isn't it like you know, you cannot even live without a mobile for one single day. आप बिना Instagram, WhatsApp, Facebook, जो भी सोशल मीडिया, यूट्यूब चेक किए बिना नहीं रह सकते हैं. दैट इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया. उस अटेंशन को ये ग्रैब करके करते हैं एडवर्टाइजमेंट. आप, एंड यू नो, दे आर सो गुड एट टैगिंग यू, दे आर सो गुड एट नोइंग व्हाट यू डू. आप कब इमोशनल हैं, इमोशनल स्टेट में आप क्या टाइप कर रहे हैं, इमोशनल स्टेट में आप अपने कौन से एक्स को स्टॉक कर रहे हैं, आप किस फ्रेंड की प्रोफाइल बार बार जाकर विजिट कर रहे हैं, आप किस रिलेटिव की फ़ोटो को आप कितने बजे तक रात को उठे हुए हैं, आप क्या खाना पसंद करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कौन सी साइट्स पे आप बार बार जाते हैं, what are your likes, what are your dislikes, what is it that you like. All of this is called surveillance capitalism. ये वर्ड तो मुझे पता ही नहीं था. Yes, all these words are called surveillance capitalism. ये आपका मतलब आप सोचिए, आप ये हैं तो ये exactly आपका एक डिजिटल क्लोन तैयार कर देंगे, और उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इस डिजिटल क्लोन को क्या पसंद है, कितने बजे उठता है, जगता है, कितने बजे यूट्यूब पे आता है, यूट्यूब पे क्या देखता है, फेसबुक पे क्या देखता है, इंस्टाग्राम पे क्या देखता है, all of this. And then they start sending you advertisements, then they start sending you these nudges, and you get trapped into all of this. This is how kind of dangerous all of this is. It is right. And the biggest thing about them is, जो मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, वो डॉक्यूमेंट्री भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. वो देखी तो मैंने देखा कि यार ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इतनी स्मॉल चेंजेस. आपका फ़ोन आपके पास नहीं होगा, आप यू गेट इरिटेटेड. आप यू नो, आप सुबह रोज़ उठ के अपना फ़ोन देखेंगे, रात को सोने से पहले अपना फ़ोन देखेंगे, आप ऐसी वीडियोज़ देखना. सो आपके अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्टेंट को कंज्यूम करेंगे स्लोली स्टेडली, एंड ये इतना स्लो, इतना ग्रेजुअल ये चेंज होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा. दीज आर कॉल्ड द imperceptible changes. You will be changing as a person, as a personality. आप चेंज हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप चेंज हो गए हैं. सो ध्यान से सोचिए, whenever you're on a social media handle, आप क्या गेन कर रहे हैं, क्या लूज कर रहे हैं, और आप कितना ट्रैक हो रहे हैं. They have
every information about us from each and every click. और आपको क्या लगता है डिलीट करने के बाद या you delete your profile, क्या वो really delete हो जाती है? And the beauty is all of these tracking things that happen, all of this whatever information, whatever data they gather about you does not really have a lot of human supervision. All of these are artificial intelligence based mega computers, massive things which do this kind of surveillance, and they're not really backed by a human. So all of this surveillance is happening by machines. They gather all data, they predict what we do, then they start feeding us information according to this, and slowly, steadily they program us at a very deep level. मैं जैसे वो documentary में देखती हूँ, I've never been to like a place where they kind of play poker and वो ताश जुआ वाला, but they have a slot machine. तो आपको लगता है यार ऐसे ऊपर and then slot you put down and then इतना पैसा इकट्ठा होगा. So it's like a जुआ, it's like a लत लगना. It's like, oh my god, you get hooked to it. That's exactly what they do. They program you at an innate level. They get into your brain and then they know exactly what hormones to secrete, what will make you happy, what will make you sad. When you're sad, what do you do? And that is the kind of power that we give these social media handles. So that is something that you have to decide. That's something that you have to find out, that would you like to give them as much power as you do? And what do they do with this kind of power? Right? That is scary. So I thought I should at least tell you that it is not as simple, as easy and as fun as it just looks in the first instance. It is in a way giving all your attention, giving your time, giving your energy and giving them ownership on your life. Would you want to give them this ownership on your life? आज का lecture आपको कैसा लगा? How many of you have started to think in a different way? Write it down in the comment section and tell me. And that's about it from my side. I thought I must at least warn you, tell you, guide you so that you are able to take an informed decision. Bye bye, take care, and don't forget to like, share and subscribe. And this time newsletter is also going to be this Sunday's newsletter on a similar topic. So take care, lots of love. Bye mascots, bye.